An explosion-like sound heard outside the Wadala Bangar police chowki in Punjab's Gurdaspur district triggered panic in the area, prompting police to launch an investigation. This is the third such incident in the past 7 days. A blast occurred at the Islamabad police station in Amritsar on December 17. No one was injured in it. कंट्रोल रूम से भी इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई सी जिस तो बाद इमीडिएटली सीनियर ऑफिसर जो कि नज़दीक ही मौजूद सी वो उत्थे पहुंच गए सन तो उन्होंने आके इत्थे लिखा है बेसिकली एक रिपोर्ट किया गई सी कि आवाज़ सुनाई दी गई जो इत्थे मौके ते आके देखा गया तो इत्थे एक जिहड़ा ये शीशे का दरवाजा सीगा वो जिहड़ा टुटिया सी ते उहदे थल्ले ईंट लगी हुई सी सो ये हले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि किस चीज़ का उन्होंने लग रहा है बट डेफिनेटली इतने कोई मौके के इस तरह के हालात ये नहीं बयान करते कि कोई धमाका या इस तरह की कोई चीज़ हुई हो. It was reported that some sound was heard. After reaching the spot, it was found that the glass of a door had shattered and a brick was lying nearby. The development comes 2 days after a suspected blast took outside Bakshiwal police chowki in Gurdaspur. In an unverified post circulating on social media, the terror outfit Khalistan Zindabad Force claimed responsibility for it.